Welcome everyone to our second session of Routes and Networks for LRDI CAT 2026. In this, we are going to solve another very good Routes and Networks set. And in this, we're going to cover a very important fundamental, which is how to trace paths without missing any. If you recall in the last video, we covered two very important concepts. One is backtracking and one is forward branching. I don't know if these are official names or not, but we understood both these concepts in depth. If you haven't watched the last video, please watch the first episode of Routes and Networks before jumping onto this, because trust me, sequentially if you follow, it's going to help you a lot more. But nevertheless, you can also watch this one and then go back to the first one. It won't hamper your progress that much. So yeah, let's directly jump onto the question. As you can see, the question is in front of you. A tech company has certain intermediate sorting centers carrying premium laptops in 8 locations named A, B, C, D, E, F, G, and H. These laptops are to be carried to the corporate office for final allocation by a transport vehicle. Various paths connecting different locations as well as the number of laptops stored at different locations are shown in the diagram. It means these are number of laptops stored at that particular location. Okay. The driver can take only one of the paths given in the diagram and can travel along the direction of the arrow. For example, the driver can travel from A to B but not from B to A. So guys, this is what arrow means. If it's like this, it means you can go from this point to this point. Simple. Even if it's not mentioned, we follow the simple convention. Okay. If there is no arrow, if it's a straight line like this, it means this is a bi-directional route. You can go from here to here as well and here to here as well. So even if it wasn't mentioned, we would have understood ki arrow hai. Iska matlab it's a unidirectional path. The driver starts with an empty secure truck from the main warehouse. Start. Okay. Follows one of the possible routes, visits all the sorting centers along the route, loads all the laptops at that location into the truck, and finally drops all the laptops at the corporate office. Let's look at the first question. How many routes can a transport vehicle take from the main warehouse to the corporate office so that it carries at most 700 laptops in total? Okay. Firstly, let me tell you one thing. This isn't about speed maths. It is about two very important skills. This question is about two important skills. Number one is, can you trace all valid paths in a directed network without missing any? All paths in a directed network. This is a directional network, right? Without missing any. And can you add the node values correctly? Simple. Once you learn this method, trust me, you're going to be able to solve any routes and network set properly. Okay. Now let's understand the routes. This is your end, by the way. So A and the arrow is towards B. It means you can go from A to B. It is mentioned. Numbers, these are not distances. As I've mentioned, these are the laptops stored at that location. Okay. We are not adding distances, not adding anything else. We are just adding the laptops at the locations we visit. This is it. Okay. Now the driver starts from the main warehouse with an empty truck. And whenever he reaches a sorting center, he loads all the laptops from that center into the truck. He does not drop anything until the corporate office. Loads all the laptops and finally drops all the laptops at the corporate office. Iska matlab, he doesn't drop anything until the corporate office. So I'll give you an example. If my route is A to B to C to office, let's say इसको मैं W बोल देता हूँ, इसको मैं O बोल देता हूँ. Okay. So if my route is this, it's an example. It's an example. इसका मतलब ये है, total laptops that will be carried are A plus B plus C पे जो भी value लिखी है, 500 plus 100 plus 100, यानी 700, and 700 laptops will be dropped
to the office. This is what it means. Warehouse contributes 0. Office also contributes 0. Okay. I hope the set is clear now. Now, write node values. You can see all the node values clearly. एकदम clearly दिख रही है all the node values. I have pasted the same figure here. Can you clearly see all the node values? Now, outgoing arrows की जो list है, ये arrows की list आप बना के रख लो, because this particular list will ensure 200% accuracy. I'm teaching you a method that will ensure 200% accuracy. So, from warehouse, where can we go? We can go to A and F. Okay. From A, where can we go? We can go to B and E. Okay. From B, where can we go? We can go to C, E. Okay. From F, where can we go? We can go to E, G. From E, where can we go? We can go to C, D. From G, where can we go? From G, we can go to D, H. Okay. From D, where can we go? From D, we can go to only office. No, C also, yeah. C, office. From C, we can go to only office. From H also, we can go to only office. This is the outgoing list. Simple. Outgoing arrows list. Now, this list will ensure 200% accuracy. Now, core method to solve this whole set. Enumerate all warehouse to office. If this is your W, let's give this name convention as O. Enumerate all warehouse to office routes once and make a route table. Make a route table. Simple. All the questions, if you will see from question 5 to question 8. Okay. I've drawn it 3 times, but yeah. All the questions, if you will see, they are asking about the same things. Do you know how to trace all the routes or not? Because if you know that, khatam. That is it. So now what we'll do? We'll list down all the possible routes from warehouse to office. For each route, compute total laptops. Then questions are simple counting questions. So pehle mein what we'll do? List all possible routes. ये हमने कर लिया, लिख लिया है. This is your first, and second is count all the laptops. ठीक है? For each route. Now our framework is ready. Start solving. You remember last time forward branching में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि pick a node and see वहां से कहां जा सकते हो. Then second node पे जाके देखो वहां से कहां जा सकते हो. Then third पे जाके देखो वहां से कहां जा सकते हो. And you will be able to trace all the paths. This is what I taught you, right? We are doing the exact same thing here. The exact same thing. You'll see. अब मुझे ये बताओ. From W, forget about this path as of now. ये figure को भूल जाओ. From W, where we can go? From W, we can go to A. Case 1 is W से A जा सकते हैं. Case 2 is W से F जा सकते हैं, right? So let's make the first branch. W से A का केस लेते हैं. अभी केस 2 यहाँ लिख देता हूं मैं, W से F. अब केस 1 लेते हैं W से A वाला. ठीक है? अब W से A वाला है, तो अब फॉरवर्ड ब्रांचिंग करते हैं. वेरी इजी. अब मुझे ये बताओ, A से वेयर कैन आई गो? I can go to B, I can go to E. सिंपल. अब मैं एक काम करता हूं, लेट मी गो टू E. पहले मैं ये ब्रांच स्प्लिट कर देता हूं.
केस 1 में W से A, एक बार B चलते हैं, एक बार E चलते हैं। ओके, अब B से वेयर ऑल आई कैन गो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ से, E चलते हैं। ओके, अब मुझे ये बताओ B से वेयर कैन आई गो? फ्रॉम B इधर आई कैन गो टू C और E। एक बार यहां से C चलते हैं, एक बार यहां से E चलते हैं। ठीक, आई होप इट्स विजिबल। या सिंपल। अब ये बताओ फ्रॉम C वेयर कैन आई गो? C से आई कैन ओनली गो टू ऑफिस। यहाँ देखो, C से आई कैन गो टू ऑफिस। तो ये वाला पाथ हो गया मेरा, ये वाला पाथ मेरा कंप्लीट हो गया बिकॉज आई रीच ऑफिस। अब नाउ लेट्स गो टू ई। ई चले, ई चलते हैं। फ्रॉम बी वी गो टू ई, फ्रॉम ई वी कैन गो टू सी एंड डी, राइट? फ्रॉम ई वी कैन गो टू टू प्लेसेस विच इज सी एंड डी, राइट? अब चलते हैं, चलो ई से चलते हैं सी। अब मुझे ये बताओ मैं सी से कहां जा सकता हूँ? सी से आई कैन गो टू ऑफिस। तो ये वाला भी मेरा पाथ कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। ई से आई कैन गो टू डी ऑल्सो। फ्रॉम डी कैन आई रीच ऑफिस? डी से आई कैन गो टू सी ऑल्सो, डी से आई कैन गो टू ऑफिस ऑल्सो डायरेक्टली। तो एक बार डी से सी चलते हैं, सी से ऑफिस चलते हैं, ये वाला पाथ भी कंप्लीट। एक बार डायरेक्टली डी से ऑफिस ही चल जाते हैं, ये वाला पाथ भी कंप्लीट। थोड़ा बड़ा लिख दूं, ई से सी, सी से ऑफिस, फिर मैं आया ई से डी, डी से सी, सी से ऑफिस, डायरेक्टली डी से ऑफिस आ जाता है। हो गए मेरे 4 पाथ कंप्लीट। दिस इज माय पाथ 1, दिस इज माय पाथ 2, दिस इज माय पाथ 3, दिस इज माय पाथ 4। हो गए सारे पाथ कंप्लीट, सॉर्टेड। अब ए से ई चलते हैं, ए से ई चलते हैं। ए से बी वाले में सारे कंप्लीट कर दिए, सिंपल। नाउ लेट्स गो टू ए टू ई। अब ई से आई कैन ईदर गो टू सी और डी। सो ई से पहली बार में सी चलते हैं, दूसरी बार में डी चलते हैं। डी से व्हाट ऑल कैन आई डू? सॉरी, सी से व्हाट ऑल कैन आई डू? सी से आई कैन ओनली गो टू ऑफिस। तो ये वाला पाथ भी मेरा कंप्लीट हो गया, पाथ 5। डी से व्हाट आई कैन डू? या तो मैं सी जा सकता हूँ या मैं ऑफिस जा सकता हूँ। एक केस में सी चलते हैं, एक केस में ऑफिस चलते हैं, एक केस में डायरेक्ट ऑफिस चलते हैं। दिस बिकम्स माय पाथ 6, दिस बिकम्स माय पाथ 7। सिंपल, समझ आ रहा है? हाउ इजी इट बिकेम फॉर अस टू ट्रेस पाथ्स, हाउ इजी इट बिकेम। I traced 7 paths so very easily, like so very easily, right? Case 2 follow करें, let's follow case 2 now. Case 2 is W to F, right? ये आपका केस 1 खत्म कर दिया मैंने। केस 2 में चलता हूँ अब मैं आपके लिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ केस 2, W to F। अब मुझे बताओ F से वेयर कैन आई गो? E और G। F से आई कैन ओनली गो टू E और G। पहले चलते हैं F से E, इट इज रिटन हियर। F से आई कैन गो टू E और G, पहले E चलते हैं। दूसरे केस में चलेंगे, यहाँ चलेंगे G, ठीक। अब E से बताओ व्हाट आई कैन डू? E से आई कैन गो टू C और D, C और D। पहले केस में C चल लेते हैं, दूसरे केस में D चल लेते हैं। C से वेयर आई कैन गो? C से आई कैन ओनली गो टू ऑफिस। तो मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा, दिस बिकम्स माय पाथ 8, राइट? पाथ 8 ये भी कंप्लीट हो गया। D से वेयर आई कैन गो? D से इधर आई कैन गो टू C और ऑफिस। एक केस में C चलते हैं, एक केस में डायरेक्टली ऑफिस पहुंच जाते हैं, इसको पाथ 10 कह दिया। C से हम सिर्फ ऑफिस ही जा सकते हैं, तो ये आपका पाथ 9 हो गया। तो क्या आपका ई वाला पाथ खत्म हो गया?
बताओ, ई वाला पाथ खत्म, 3 राउट्स मिल गए आपको जब मैं ई गया तो। जी चलते हैं अब बताओ मैं जी से कहाँ जा सकता हूँ, जी से या तो मैं डी जा सकता हूँ या एच जा सकता हूँ। डी चल लेते हैं, एच चल लेते हैं। ठीक, डी से वेर आई कैन गो, डी से इधर आई कैन गो टू सी और आई कैन डायरेक्टली गो टू ऑफिस, सी से आई कैन ओनली गो टू ऑफिस। तो ये पाथ भी कंप्लीट 11, ये पाथ भी कंप्लीट 12। एच चलते हैं, एच से वेर आई कैन गो, एच से आई कैन ओनली गो टू ऑफिस, तो पाथ 13। इज देयर एनी अदर पाथ पॉसिबल, बताओ, एनी अदर पाथ पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, राइट। तो इफ यू सी मैंने सारे पाथ्स बना दिए एंड इट वाज सो इजी विद फॉरवर्ड ब्रांचिंग। एक जगह से देखा कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, एक एक केस बनाता गया, फिर देखा उस जगह से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, फिर बनाता गया, फिर देखा उस जगह से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। एंड आई हैव बीन एबल टू ट्रेस एवरी सिंगल पाथ विदाउट मिसिंग एनी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, राइट? You understand this and you're never going to miss out on any questions of routes and networks. Trust me, guys. तो हाँ जी, बना लिया अब? अगर बना लिया तो चलो नाउ लेट्स लिस्ट डाउन कि पाथ 1 में हमारा टोटल कितना होगा। पाथ 1 में हमारा टोटल कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल लैपटॉप्स लिख देता हूँ मैं आपके लिए। पाथ 1 में, 1 में क्या है, 1 में जा रहे हैं हम ए प्लस बी प्लस सी, राइट? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं अगर आपकी विजिबिलिटी कम ना हो तो, ताकि यू विल बी एबल टू सी। यार को हाँ, थोड़ी सी विजिबिलिटी कम तो जाएगी आई गेस। और मैं यहाँ से आपको ट्रेस करना बता देता हूँ। एच का मैं, आई होप आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, जी का आपका 100 है और एच का आपका 800 है। ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहा है। पहला पाथ है WABC एंड ऑफिस, ये ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेना इस पर। तो अब मुझे बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था वेयर हाउस का कंट्रीब्यूशन 0 है और कॉर्पोरेट ऑफिस का कंट्रीब्यूशन 0 है। तो डब्ल्यू और ऑफिस को हटा के बीच के बाकी ऑल द अदर स्टोर्स का यू हैव टू जस्ट टेक द काउंट नाउ। तो ए प्लस बी प्लस सी इज व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी इज 700 फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का कितना है बताओ? सेकंड इज बी, नहीं, ए प्लस बी प्लस ई प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ई प्लस सी, दिस इज योर सेकंड वन। बताओ ए प्लस बी प्लस ई प्लस सी कितना है? ए प्लस बी प्लस ई प्लस सी है आपका 500, 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 800। थर्ड, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी प्लस सी। तो ए प्लस ई प्लस डी प्लस ए प्लस बी इज 500 प्लस 100, 600 प्लस ई इज 700 प्लस डी इज 800 प्लस सी इज 900। फोर्थ का कितना है? फोर्थ इज ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, because fourth से you have directly, D से you directly reach office, so this becomes your A plus B plus E plus D 800. Okay, what is it for fifth? Now let me zoom it a bit. Yes, यहाँ पे you can see fifth वाला। What is it for fifth? A plus E plus C, A plus E plus C कितना है?
A plus E plus C is 700. Sixth, A plus E plus D plus C. A, E, D, C. 800. Seventh, AED. It is simple AED. Seventh is AED. AED is what? AED. 700. Sorted. Perfect. Eighth पे आ जाओ. FEC. 200. EC. 400. Simple. 200. 100. 100. Ninth. FEDC. 200, 200, 200, 100, 300, 100, 400, 100, 500. 10th, FED, simple, FED. Again, it is 400, 200, 100, 100. 11th, FGDC, FGDC, 500. 12, FGD. This is 400 again. FGD, 400. And for 13th, FGH, 200, 100, 300, 800, 1100. Started. So now I've jotted down sabka path. This right there in front of you. Iski let me take a screenshot and paste it. Okay. Because अब ये हमने कर लिया, अब खत्म हो गया हमारा. ठीक है. Now we've taken the values. How many routes can a transport vehicle take from the main warehouse to the corporate office so that it can carry at most 700? अब at most 700 इनमें से कितने routes में आ रहा है मुझे बस ये बताओ. एक में, दो में, तीन में, 4, 5, 6, 7, 8. 8 routes have at most 700, so answer is 8. Sorted. Maximum. What is the maximum difference between the number of laptops carried by the vehicle along a route that visits the maximum number of intermediate sorting centers and a route that visits the minimum number of intermediate sorting centers? Now, maximum number of intermediate sorting centers क्या हुए? बीच के जो ये sorting centers हैं between W and O, that is the intermediate sorting centers. Simple. तो maximum कितने हैं? You tell me. मैक्सिमम विजिटेड कितने हैं? मैक्सिमम विजिटेड देखते हैं. पहले वाले में कितने हो रहे हैं? इन पाथ 1, 1, 2, 3, you have 3. In path 2, 1, 2, 3, 4. In path 2, you have 4. In path 3, you have 1, 2, 3, 4, 5. In path 3, you have 5. So for now, path 3 has 5. Now, in path 4, how many? 1, 2, 3, 4. Path 3. In path 5, 1, 2, 3. In path 6, 1, 2, 3, 4. In path 7, 1, 2, 3. No. In path 8, 1, 2, 3. No. In path 9, 1, 2, 3, 4. No. In path 10, 1, 2, 3. So till now, path 3 has 5 and no other path for now. I have found 5. Let's see if we can find in 11, 12 or 13. In path 11, 1, 2, 3. Nope. In path 12, 1, 2. No, path 11, 1, 2, 3, 4. Sorry. In path 12, 1, 2, 3. Nope. In path 13, 1, 2, 3. So my maximum number of intermediate centers are in path 3, which is 5, which is A, B, E, D, C, O. A, B, E, D, C, O. So maximum is A, B, E, D, C, O, path 3. Minimum कितने हैं? Path 3 के routes कितने हैं? Path 3 के, sorry, number of laptops in path 3 are 900.
So this is path 3, 900 minus minimum number of intermediate sorting centers. Now, what are the minimum number of intermediate sorting centers? Minimum number till now, if you see, I found 3. I didn't find the path with 2. So I found minimum 3 थे. So now let's do one thing. 3 वाले गिनते हैं. 3 वाला कौन सा? path 1 is 3 वाला. Right? Path 1 is 3 वाला. 1, 2, 3. Path 5 is 3 वाला. Path 5 is 3 वाला. Path 7 is also 3 वाला. 1, 2, 3. Yeah. So path 1, path 1, 2, 3, path 5, and path 7. For now. Path 8 is also 3 wala. 9 is not 3. Path 10 is also 3. 10 is also 3. 1, 2, 3. Path 12 is also 3. And path 13 is also 3. So how many paths do I have with 3? I have 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13. 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13 path. ये सारे paths have 3 intermediate nodes, right? So now let's see कि इनकी values क्या है. 1 की value 700, 5 की value भी 700, 7 की value भी 700. So from case 1, all 3 intermediate ones have 700. Let's look at case 2. 8, 10, 12, 400, 400, 400. 8, 10, and 12, all 3 have 400, and 13 has 1100. It means we get 2 values from case 2 which are 400 and 1100. So now let's do one thing. Now difference पूछा है आपसे, right? तो इसमें mod लगाओगे. Why? Because ये नहीं बोला कि वो कितने से बड़ा या छोटा है. We have to find the absolute value. So let's take the absolute value from first case, 900 minus 700. This comes out to be 200. From this case, mod of 900 minus 400, this comes out to be 500. From this case, mod of 900 minus 1100, this again comes out to be 200. So what is the maximum difference? 500. So your answer is, okay, answer here, 500. Okay. Now, what is the number of possible paths taken by the driver between main warehouse and the corporate office such that the number of laptops carried by the vehicle is strictly between 600 and 1000? 600 and 1000 के बीच का स्ट्रिक्ट चाहिए आपको. अभी हमने ये वैल्यूज निकाली है, देख लेते हैं. 600 to 1000 के बीच में आ रहा है ये. Yes, ये आ रहा है. Yes. Let me remove these. ये आ रहा है. Yes. 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 ये आ रहा है. No. 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 ये आ रहा है. So I just have simple bhai. I just have only case 1. All the values from case 2 rejected, all the values from case 1 accepted. So 7. The driver can take 7 routes. जहाँ पे the number of laptops are between 600 to 1000. So answer is 7. What is the difference between the number of laptops on the route that carried the maximum number of laptops and the route that carried the minimum number of laptops? Now what is the maximum number of laptops? 1100. What is the minimum number of laptops? 400. 3 का 400. तो आंसर क्या हो गया? 1100 minus 400. Simple 700.
700. Solved. How easily were we able to solve once we created two things? First, this outgoing arrow list. सबसे पहले हमने ये आउटगोइंग एरो लिस्ट बना दी कि हम किसी भी जगह से कहां कहां जा सकते हैं. Simple. Then we just used our forward branching method that we followed in the last that we learned in the last video, our routes and networks session 1. And simply हमने सारे के सारे paths बना दिए. उसके बाद तो it was just a simple question. So once you understand this, you will be able to solve any question. You'll never get an routes and networks or question wrong. This is my guarantee. So I hope this is clear. Now go back, watch these two videos 2 times at least, and get those concepts in your head, the backward method and the forward branching method. And if you know these two guys, routes and networks is done. This is it for session 2 of routes and networks. In the third session, we are going to solve PYQs of routes and networks, and I'll solve the PYQs and tell you that what all we have learned by applying that, only how easily we are able to navigate any routes and networks question. Simple ekdam. I hope this particular set is absolutely clear. And in case you have any doubts, put them in the comment section. And you can also join the WhatsApp group of PrepNip Society, where we take the doubts and everything. The link will be in the description. Thank you so much for watching. Like, share, and comment, and share it with your friends who find routes and networks difficult or who are preparing for CAT 2026. And yeah, see you all in the next video. Till then, bye bye. Take care.